Hello. In last lecture, we have discussed about the unit number first, differentiable equation and applications. Differentiable equation and application. Okay. Then in last lecture, we have discussed finding particular integral by using shortcut method. Okay. Finding particular integral by using shortcut method. उसमें case number first, finding pi when f of x is equal to e raised to ax. F of x is equal to e raised to ax is constant. Okay. How to find pi? By using shortcut method when f of x is equal to e raised to ax. Okay. Now in last lecture we have discussed all about this. Okay, how to find pi. Now today we will start directly example on that topic. Okay, so देखो examples example first, solve d2y upon dx square plus 2 dy by dx plus 1 or y is equal to e raised to 5x Okay. Now first we have to find cf, after that we have to find pi. Okay. First we have to find cf, after that we have to find particular integral. Okay. So for cf, this is your second order linear differentiable equation. Okay. Y is dependent and x is independent. Okay. Solution, put capital D is equal to d by dx. Capital D is equal to d by dx. D is differentiable operator. Okay. Now we get this equation. This d by dx is replaced by capital D. We get d square y plus 2 dy plus y is equal to e raised to 5x. Okay. Replace capital D as d by dx. Okay. Now from this take y as a common. क्या मिलेगा हमें? d square plus 2d plus 1 into y is equal to e raised to 5x Okay. This is your phi of d into y is equal to f of x. Okay. This is your standard form. Phi of d into y is equal to f of x. Now for cf, that is for finding complementary function, this f of x is 0, तो क्या जाएगा? d square plus 2d plus 1 into y is equal to 0. Okay, put f of x is equal to 0. Then after that auxiliary equation, this phi of d into y equal to 0, but y is not equal to 0, implies this bracket is 0. क्या मिलेगा? d square plus 2d plus 1 is equal to 0. Okay. This is quadratic equation in D. Find roots of that equation. Okay. In last lecture हमने discuss किया है वहाँ पे उसके रूट क्या मिलते हैं. Okay. By using कैल्सी और by using quadratic equation formula, find roots of that equation. Okay. Then we have to write CF directly. Okay. CF. तो क्या मिलेगी उसकी roots? Here we get d is equal to -1, -1. D is equal to -1, Okay. Then how to write CF? Case number second, roots are the real number and repeated. Then how to write CF? We get CF is equal to in bracket C1 plus C2x into e का power this repeated root is -1, तो क्या जाएगा? e का power -x. Okay. वही सेम एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है in CF. Okay. This is your CF. Okay. This is your CF. Then PI. After that we have to find PI. For PI, that is particular integral. We know that pi is equal to क्या है फॉर्मूला ऑफ pi?
Pi is 1/5 of d into f of x. Okay, this is your formula of Pi. 1/5 of d into f of x. But here phi of d is, phi of d क्या है हमारे पास? This is your phi of d, correct? This is your phi of d, d square plus 2d plus 1, and f of x is, this is your f of x, e का power 5x. Now how to find Pi when f of x is e raised to ax? Okay, so in phi of d, this is your phi of d, in phi of d, d is replaced by a, in phi of d, d is replaced by ये, तो क्या मिलेगा? टेल मी. अभी देखो d क्या, d की जगह क्या क्या पुट करना है हमें? ये यहाँ पे a क्या है? a is 5, तो क्या मिलेगा? दिस d is replaced by 5, क्या जाएगा? 25 प्लस 2 into 5 10 प्लस 1. ओके, d is replaced by 5, e का पावर 5x एज इट इज इक्वल टू 1/, ये कितना मिलेगा? तो 1/, दिस इज 25 प्लस 10 35 प्लस 1 36, e का पावर 5x. दिस इज योर Pi. दिस इज योर Pi. ओके, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, उसमें केस नंबर फर्स्ट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द जनरल सॉल्यूशन. ओके, तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन, देन द जनरल सॉल्यूशन, देन द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? y is equal to CF plus Pi. y is equal to CF plus Pi. Okay, y is equal to CF plus Pi. Okay, then write CF, then write Pi. We get y is equal to CF क्या है हमारे पास? in bracket C1 plus C2x e का पावर माइनस x. दिस इज योर CF प्लस Pi. Pi क्या है? 1/36 e का पावर 5x. दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज योर general solution. Y is equal to CF plus Pi. Okay, okay, this is your example first. This example depending upon shortcut method. Okay, in shortcut method case number first, finding Pi when f of x is equal to e का power ax. Okay, तो यहाँ पे important क्या है? in phi of d, in phi of d, d is replaced by a, d is replaced by a, d की जगह क्या पुट करना है? ये, and this is your CF. वो CF हमने already discuss किया है. Okay, then example second, find Pi, find Pi. Example second, find Pi, that is particular integral. यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा रह सकता है? सॉल्व बोल दिया, सॉल्व. एट द टाइम वी हैव टू फाइंड CF प्लस Pi, और फाइंड Pi बोल दिया, तो वी हैव टू फाइंड ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल. Find Pi for d square minus 2d plus 1 into y is equal to e का power x, e का power x. Okay, we know that the Pi is, क्या है Pi? formula of Pi. This is your also second order linear differentiable equation. Okay, then Pi is equal to 1/5 of d into f of x. This is formula of Pi. Pi is equal to 1/5 of d into f of x. Okay, then Pi is equal to, तो क्या जाएगा? phi of d, this bracket is your phi of d. Okay, तो क्या जाएगा? d square minus 2d plus 1, and f of x is e raised to x. Okay, f of x is e raised to x. Okay, this is your f of x. Okay, f of x क्या है? e raised to x. Okay, then how to find Pi? By using case number first, finding Pi when f of x is e raised to ax. Here value of a is 1, value of a is 1. Okay, तो यहाँ पे क्या है रूल? in phi of d, d is replaced by 1, d is replaced by 1, तो क्या जाएगा? d की जगह 1 पुट कर दो, क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 square 1 minus 2 into 1 2 plus 1 e raised to x, e raised to x. अभी देखो यहाँ पे दिस इज 1/1 minus 2 plus 1. ओके, 1 minus 2 plus 1 वो क्या मिलेगा? 0. दिस इज 1/0 e raised to x. ओके, डिवाइड में क्या गया? 0. एट दैट टाइम केस फेल, केस क्या हो गए? फेल हो गए. क्यों? बिकॉज डिवाइड में 0 ना आना चाहिए. ओके, तो केस फेल होने के बाद हम क्या करते हैं? उसका बेस क्या है? दिस इज योर बेस, दिस इज योर बेस. मल्टीप्लाई बाय एक्स,
multiply by x and take derivative of this. Okay, multiply by x and take derivative of this. तो क्या मिलेगा therefore pi is equal to multiply by x take derivative differentiation of d square क्या जाएगा 2d माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2d क्या मिलेगा 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या जाएगा 0 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट e रेज टू x. ओके, तो f ऑफ x क्या है e रेज टू ax. अगेन d इज रिप्लेस्ड बाय a, बट ये क्या है 1. अगेन d रिप्लेस्ड बाय 1. d इज रिप्लेस्ड बाय 1. तो क्या जाएगा आई विल राइट हियर pi इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय पुट d इज इक्वल टू 1. पुट d इज इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा 2 minus 2 into e raised to x as it is. Again 2 minus 2 is 0. तो क्या जाएगा x upon 0 e raised to x. यहाँ पे क्या आ गया अगेन 0. अगेन केस फेल. देन क्या करना पड़ेगा उसका बेस क्या है दिस इज योर बेस. टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस. ओके, टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड मल्टीप्लाई बाय x क्या जाएगा x इंटू x स्क्वायर. तो pi क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2d माइनस 2. ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ 2d क्या आता है 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 क्या जाएगा 0 बिकॉज 2 इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू e रेज टू x. ओके, तो दिस इज योर pi. यहाँ पे कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है. सॉल्व बोल दिया सॉल्व, तो हमें क्या करना है फाइंड CF, फाइंड PI, देन राइट y इज इक्वल टू CF प्लस PI. दैट इज जनरल सॉल्यूशन. ओके, और फाइंड PI बोल दिया, वी हैव टू फाइंड ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड. Find pi for d square plus 5d plus 6 into y is equal to 3 raised to x is equal to 3 raised to x. Find particular integral. Okay, here we have to find only pi. तो क्या जाएगा pi आंसर. we know that pi is equal to formula of pi 1 upon 5 of d into f of x. Okay, 1 upon 5 of d into f of x. then क्या मिलेगा pi is 1 upon value of 5 of d. this is d square plus 5d plus 6 and value of f of x क्या है 3 raised to x. f of x क्या है 3 raised to x. अभी देखो यहाँ पे क्या है 3 raised to x, बट आपकी मेथड क्या है when f of x is e raised to ax. ओके, तो यहाँ पे क्या है 3 raised to x. नाउ टेल मी, आई विल राइट इन दैट ब्रैकेट हाउ टू राइट 3 raised to x इन द फॉर्म ऑफ e एन log. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. दिस कैन बी रिटन एज e raised to log of 3 into x. e raised to log of 3 into x. Now compare this. This is your log of 3 and this is your a. Okay, this is your log of 3 and this is your a. तो क्या मिलेगा हमें a is log of 3. समझ में आता है सबको. a is log of 3 लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. और सपोज हियर इज 2 raised to x. तो a क्या मिलेगा log of 2. ओके, तो d रिप्लेस बाय log of 3. रिप्लेस बाय log of 3. तो क्या मिलेगा यहाँ पे pi इज इक्वल टू 1 अपॉन d रिप्लेस बाय log of 3. तो क्या जाएगा log of 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5d इज log of 3 प्लस 6 3 raised to x as it is. This is your pi, that is particular integral. Okay, particular integral. Okay, यहाँ पे कन्वर्जन क्या है 3 raised to x कैन बी रिटन एज e का पावर log of 3 into x. ओके, देन d क्या जाएगा log of 3. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4th.
example number 4th, finding pi for d square minus 7d plus 10 into y is equal to e का पावर x plus 5, e का power x plus 5, e का power x plus 5. Okay, here we have to find also pi. तो क्या जाएगा? We know that the formula of pi is equal to 1 upon phi of d into f of x. Okay, 1 upon phi of d into f of x. Then write value of phi of d. Phi of d is 1 upon d square minus 7d plus 10, and f of x किसमें है? f of x belongs to two terms. f of x belongs to two terms. So we have to write this f of x in bracket e raised to x plus 5, e raised to x plus 5. अब देखो यहाँ पे this is your e raised to x and this is your 5. We have to separate this 1 upon phi of d to first and second with respect to positive sign. तो क्या मिलेगा? 1 upon d square minus 7d plus 10 e raised to x plus multiply this 1 upon d square minus 7d plus 10 into 5. Okay, now here we have to find pi by using same method. f of x is e raised to ax. a की वैल्यू क्या है? 1. a is 1. तो यहाँ पे क्या जाएगा? d रिप्लेस, यहाँ पे a क्या है? 1. तो d is replaced by 1. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 upon 1 minus 7 into 1. This is 7 plus 10 e का पावर x as it is plus. देखो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट 5. यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट 5. Then any constant can be written as in the form of e. Any constant can be written as in the form of e. How to write? This 5 can be written as e का पावर 0x. e का पावर 0x. Okay. This e का पावर 0x क्या मिलेगा? 1. क्या मिलेगा? 1. तो 5 as it is. तो a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू 0. तो d रिप्लेस बाय 0. d रिप्लेस बाय 0. Okay. Any constant can be written as this constant into e का पावर 0x. constant into e का पावर 0x. तो d रिप्लेस बाय 0. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? this is 0, this is 0, this is 10. तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 into 5. Okay. e का पावर 0 is 1. Then solve this. This is 1 upon 10 plus 1 11 minus 7. This is 5 e raised to x plus 5 divided by 10. This is 1 by 2. Okay, so this is your particular integral. This is your particular integral. Okay, सबको समझ में आ गया? These are the important example belongs to this topic. Okay, now next example, one example for your homework. Try to solve this example. Find particular integral for d minus a bracket raised to r into y is equal to e का power ax. Okay, okay. Now how to find this? First find c up. Here solve this. Solve. We have to write solve. Solve this example. Okay. Solve this example. Okay. Okay. तो यहाँ पे क्या जाएगा? फर्स्ट फॉर सी अप एक ही रूट मिलेगा. रूट इज ए आर टाइम्स. ओके. देन राइट सी अप. देन सेम बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर फाइंडिंग पी आई वी हैव टू गेट सी अप आल्सो पी आई. देन राइट द जनरल सॉल्यूशन y is equal to सी अप प्लस पी आई. ओके.